मॉर्निंग फ्रॉम करू। कल रात को हम लोग 7:30 तक हम लोग यहाँ पे करू में पहुँच गए थे एंड जैसे ही पहुँचे वी गॉट अस सम कैश। अभी पेट्रोल अभी भरना है एंड यहाँ पे एक अच्छा रूम मिला था, स्टे मिला था विच इज़ वेरी डिसेंट यार। आई मीन इट इज़ सो क्यूट। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इट हैज़ अ स्टे ऑल्सो। सी ग्यामजुंग गेस्ट हाउस खरू, इट्स नॉट करू इट्स खरू। सो यहाँ पे आए, कल 1700 में हमको एक रूम मिल गया था विथ एक्स्ट्रा बेड। 200 रुपये का एक्स्ट्रा बेड का चार्जेस लगा था विच वॉज वेरी डिसेंट एंड विच इज़ वेरी रीजनेबल। So if you are in Kharu, I think if you are taking a stop, if you are coming from Pangong or if you are coming from Leh or something, you should take a stop at Kharu because it has ATM banks and it has petrol filling stations as well as यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, मतलब जैसे कल मेरे को सॉक्स चाहिए था, मैंने सॉक्स ले लिया और 2 चीज़ें चाहिए थी वो भी ले लिया मैंने। सो यू शुड डेफिनेटली मेक अ स्टे ओवर हियर। एंड ये गेस्ट हाउस है, ये गेस्ट हाउस बड़ा प्यारा है, इट इज़ वेरी डिसेंट। इलेक्ट्रिसिटी का इशू तो है सब जगह पे बट दे हैव इन्वर्टर एज वेल एंड सिर्फ गीज़र नहीं चलता कभी कभी जब लाइट नहीं होती, जब लाइट आती है इट वर्क्स। सो दैट्स दैट। अभी हम लोग रुके, अभी हम लोग क्या जेरी कैंस फिल करेंगे, पेट्रोल टैंक रिफिल कर देंगे, पूरा फुल कर देंगे। टुडेज डेस्टिनेशन इज टू रीच मनाली। देखते हैं बिकॉज वी आर रनिंग एज पर आवर स्केड्यूल, वी आर नॉट रनिंग अहेड, नॉट रनिंग बिहाइंड, सो दैट्स द गुड पार्ट। एंड अच्छा लगा आज नहा के थोड़ा गर्म पानी से। 2 दिन के बाद हम लोग नहाए आफ्टर हुंडर। पैंगोंग में तो नहीं, पैंगोंग वॉज वेरी डिफिकल्ट बट या सो फार वी आर गुड। अभी पेट्रोल फिल करेंगे, जेरी कैंस फिल करेंगे, देन सैडल अप करेंगे एंड विल लीव। सी यू ऑन द बाइक। Okay, so we are leaving now. It's super hot. Can't complain. अभी वैसे भी जैसे ही गाड़ी चालू हो जाएगी हाईवे पे ठंड लगने लग जाएगी, हाँ होपफुली। अब तक मैंने 3364 किलोमीटर चला लिया फ्रॉम होम टिल हियर टिल कारू। अब और 3000 तो है। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे थे, यहाँ पे चेक पॉइंट आया, पुलिस चेक पॉइंट उपशी। यहाँ पे आपको एंट्री कराना पड़ता है, पर व्हीकल एंट्री है और कितने लोग हैं, नाम, गाड़ी का नंबर एंड योर फ़ोन नंबर, सिंपल। पैंग इज़ 127, सो मोरी 173, सरचू 202। ये तुमने राइट लिया यहाँ से तांगलांगला, ओके। मनाली 425, 674। ये उपशी का छोटा मार्केट लग रहा है मेरे को। और ये रिवर है, रिवर का नाम है क्या भाई? पब्लिक कन्वीनियंस। ये उपशी ब्रिज। आज से लग रहा है कि रिटर्न जर्नी चालू हो गई है। Still we have 400 kilometers to go to Manali, but the feeling of this whole journey coming to an end, it has begun. Little sad, but equally excited to go back home as well. I want my network back. If I get my network back, then it will be very easy for me. I want to listen to some songs, man. गाने सुनने हैं मुझे। Have a look at the shades of this mountains, man. वो थोड़ा greenish है, ये थोड़ा reddish नहीं बोल सकते उसको, brown kind of stuff. This is nice. अलग ही shades है ना। Hi Amma, bye.
Look at the stars, look how they shine for you. All the things you do, it is all you. Right now, before starting, like after starting the ride, we all three were discussing like whenever we start our bikes and we hit the road, it feels home. I mean, when we take a stop, it's like very boring because we have to take the helmet off, we have to take the gloves off, open the jacket, and again, you know, all the jazz. But when you start your bike and when you are on the road, it is amazing. That feeling is, it feels like, you know how you on a Sunday morning you sit on a couch. Oh, no problem. You on a Sunday morning you sit on your couch on the sofa with a newspaper on it, legs folded, and you know, with having a sip of coffee or a tea. It feels like that. Like, yeah, we are on our bikes, all geared up, and it just feels cozy. It feels home, man. Just a triumph. So I was saying, Tanglangla अभी 28 किलोमीटर है and incline चालू हो गया है. I can feel it. थोड़ा सा ठंडा भी लगने लग गया है. थोड़ा हल्का, not too much. इग्निशन ऑफ है. इग्निशन ऑफ करो. वो चाबी ऑफ करो. ठीक है. ब्रेक दबाना. अच्छा, तुम्हारा ये भी टूट गया. मैं नहीं गिरा, मैं फोटो खींचने के लिए गया. ठीक है. मुझे नहीं पता था. वो ब्रेक लीवर, ब्रेक क्लच लीवर वो टूट गया आपका और ये टूट गया. वो तो क्या लग जाएगा. ये तो चल जाएगा, इसका टेंशन नहीं है. इसका क्या करना है लग ना ती खाली स्लोप होती. 1 मिनट रुक जाओ. ये एक एक्स्ट्रा रखना. तांगलांगला जो मेन टॉप है यही है. वो तो फर्स्ट व्यू है. अच्छा, इसके आगे आएगा. यार इसका पैसा लेगा वो मेरे से. हाँ, रेंट का है ना. कितने का लेगा ये ऐसा एटलीस्ट. यार वो तो पता नहीं, रेंट वालों का तो भरोसा नहीं है कुछ. ये ऐसे डालो इधर. डाल दो ना. क्या करूँ. सिर्फ डालना है. 1 मिनट. बस खींच लो आराम से. ठीक है. टेम्पररी तो हो गया आपका. गाड़ी चालू करके देखो. न्यूट्रल पे है क्या गाड़ी. एक मिनट न्यूट्रल पे नहीं है. कोई नहीं. सही है. आराम से जाओ. अरे मैं रुका था यार, ऐसे कैसे गिर गया पता नहीं. स्लोप पे लगा है ना इसलिए. ये मैं नोटिस नहीं किया. होता है. जाओ. ठीक है. इसकी बाइक गिर गई थी, फोटो ले रहा था.
this is the first view of Tanglangla. Nice. थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है, ठंड भी लग रही है. चलो. नो प्रॉब्लम है. चलो निकलते हैं. चल विशाल, एक जिप टाई बांध के दे दी, गाड़ी उठा के दे दी, एंड अब तो बेचारे का पैसा तो लेगा ही लेगा. Now I just wanted to take a stop and show you this. Wow, this mountainscape is amazing. The clouds are also looking amazing. Wow. Chalo. Time is 2:50 and we have reached at Tanglangla top. Tanglangla is at something around 17,482 feet above sea level. That is the 12th highest pass of the world, and we have made it. How do you feel, boys? All good. Woo! Tanglangla! 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 It is super freezing, man. Our hands are like literally frozen out. But have a look around. Oh, not gonna show that. Toilet कर रहे हैं probably. I'm done taking pictures. I'm leaving now. XCV 700. Oh. जैसे जैसे डिक्लाइन करेंगे वैसे वैसे अच्छा लगेगा यार. बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग है. यहाँ पर रुके थे, थोड़ा सा चाय पानी कर लिया. यहाँ बारिश भी गिर रहा है. बाय सर. हाँ, वो आंटी कितनी ओल्ड है. नाइस. आई कैन सी इट्स रेनिंग देयर. वहाँ पे बारिश हो रहा है, यहाँ पे धूप है. पता नहीं क्यों, बट सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट थकावट जल्दी जल्दी आ रही है. सब रख दिया ना ऐसे अंदर. So this road जिसके आजू बाजू में पूरे पहाड़ है, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज मोरे प्लेन्स. इसके आगे हमको अभी घाटा लूप्स लगेगा. मोरे प्लेन्स के बारे में इतना पढ़ा नहीं था, बट आई कैन सी दैट बोथ साइड्स आर कवर्ड विद माउंटेन्स. यार अभी हम लोग ऐसे ही जा रहे थे, यहाँ पे कुछ तो दिख गया हम लोग को. सो वी थॉट विल कम एंड चेक. वाह डूड, ओह माय गॉड, क्या है ये? ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज.